Well, so the next topic is line spectra in hydrogen atom. So the next point is line spectra in hydrogen atom. लाइन स्पेक्ट्रा हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े कि स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होता है. जब भी एनर्जी सप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, और वो जब जंप करता है तब जो फोटोन निकलता है उसमें से या वो एब्सॉर्ब करता है, that will be the difference in energy of the electron in two orbits, दो ऑर्बिट. ठीक है. So say an electron jumps from a higher orbit to a lower orbit. ठीक है. An electron jumps from Ni to Nf. Ni is the initial orbit and Nf is the final orbit, and emits a photon whose energy is given by delta E equal to ENI minus ENF. ENI minus ENF. ठीक है. So this ENI minus ENF क्या होना चाहिए? देखो एनर्जी इन द nth ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन बोला है, z का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा. So ये अगर एक्सप्रेशन हम लोग डालेंगे we'll get it to be m e to the power 4 by 8 h square epsilon naught square into 1 by ni square minus 1 by nf square, right? ये वाला फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पर डालें ni और nf के लिए, और z का वैल्यू मैंने क्या लिया? राइट, z का वैल्यू 1 लिया, इसलिए लिया. समझ आ रहा है? अब एक क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनना. देखो यहाँ पर माइनस है क्योंकि यहाँ पर माइनस था, राइट? सो अगर ये माइनस हम लोग एब्सॉर्ब करवाते हैं अंदर, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 by nf square minus nf square minus 1 by ni square लिख सकते हैं सर? हाँ या ना? और ये जो एनर्जी डिफरेंस है इसको ही हम लोग h nu बोलते हैं. h nu is the frequency, nu is the frequency, right? So that is the formula to be used when an electron is jumping from one orbit to another orbit. अब ये पूरा चीज का वैल्यू 13.6 eV है, हम लोग निकाला थोड़े पहले 13.6 eV है, तो you can put a 13.6 eV and then also write this. लेकिन वो हम नहीं लिख रहे हैं, हम एक चीज निकालने का कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखो. यहाँ पर यू नो न्यू फ्रीक्वेंसी जो होता है उसके साथ लैम्डा वेवलेंथ का क्या रिलेशन होता है? c by lambda, right? So if I write hc by lambda is equal to this expression, then I want to find out only 1 by lambda. अच्छा, next step में करते हैं. m e to the power 4 by 8 h square epsilon naught square 1 by nf square minus 1 by ni square. Therefore 1 by lambda h और c इधर चला जाएगा, m e to the power 4 by 8 h cube c into epsilon naught square 1 by nf square minus 1 by ni square. This 1 by lambda, this is called wave number. इसे क्या बोला जाता है? वेव नंबर. और जब हम लोग वेव नंबर लिखते हैं तब यहाँ पर जो ये पूरा एक्सप्रेशन होता है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन कांस्टेंट है, ऑल ऑफ देम आर कांस्टेंट वैल्यूज. तो इसको हम लोग एक नाम देते हैं, वी रिप्रेजेंट इट विद r. r is Rydberg constant. ठीक है? This is called Rydberg constant. r by gr theta আসে না, দেখো
Rydberg constant. dV আছে না আমি ভুল লিখলাম আচ্ছা Rydberg constant the value is 1.09 into 10 to the power 7 1.09 into 10 to the power 7 ঠিক আছে Rydberg constant comes out to be 1.09 into 10 to the power 7 and SI units so it is meter inverse SI unit is meter inverse ठीक है so when we talk about ionization energy you know what is ionization energy means take electron out of its orbit means take it to infinity right so ionization energy हम लोग कैसे निकालते हैं यहाँ पर करते हैं what is ionization energy right so in that case the energy which you are supplying initially electron is in the first orbit for hydrogen and finally it goes to infinity right so delta E is equal to m e to the power 4 by 8 h square epsilon naught square into 1 by n I अच्छा nf minus ni আছে তাই তো ঠিক আছে আমি উল্টো করে লিখি ni square minus 1 by infinity square this ni square is 1 square for hydrogen ionization energy for hydrogen for hydrogen this value comes out to be how much this value comes out to be 13.6 eV अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे ना सो मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है हाइड्रोजन एटम में से तो उसको 13.6 eV अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा टू पुल द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ इट्स ऑर्बिट ठीक है This is ionization energy is where you are saying the electron will go to infinity. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. Electron can travel from one orbit to another orbit. So जब one orbit to another orbit जाएगा, they will be using this concept. Alright? According to different energy levels, when an electron comes from any higher orbit to lower orbit, it radiates energy, right? So that different energy radiations are named after different scientists according to the way they have discovered them. And उसका एक छोटा सा representation हम लोगों को करना पड़ेगा. Shall I have this? ये हो गया सब लोगों? अच्छा listen we have seen that 1 by lambda equal to r into 1 by nf square minus 1 by ni square we have read this if nf means the final point where the electron is coming final orbit where the electron is coming अच्छा ये कहाँ यूज कर रहे हैं when an electron jumps from any initial higher orbit to the lower orbit. Higher orbit is Ni. The lower orbit is
NF तब हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, ठीक है। If the value of NF is 1, what do you mean by 1? Coming to the first orbit, कोई भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, तब वो जो एनर्जी छोड़ता है डिफरेंट ऑर्बिट से जब नीचे आएगा, it will give a band of energy out. That band of energy is named as Lyman series. इसे Lyman series बोला जाता है. NF equal to 1. Right. Then it is called Lyman series. Happy? Then it is called Lyman series. ठीक है? Lyman series बोला जाता है. किसे Lyman series बोला जाता है? वो जो spectral lines बनता है, वो spectral lines को Lyman series बोला जाता है. ठीक है? So for Lyman series, 1 by lambda is equal to r into 1 by 1 square minus 1 by ni square, where ni is equal to 1, 2, 3, any of them. ठीक है? If NF is equal to 2, then it is Balmer series. So Balmer series के लिए is equal to R 1 by 2 square minus so in this way अच्छा हाँ राइट 2 से होगा सही राइट एग्जैक्टली यहाँ पर 3 से होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 3 3 4 ऑलराइट सिमिलरली इसके बाद if NF is 3 then it is Passion series शायद NF equal to 4 then it is bracket and if NF equal to 5 it is alright. So up to 5 we take the different spectral lines that are emitted and we name the series. So সবকটা এইটা 2 এর পরে 3 হবে 4 হবে 5 হবে and whenever it is going to happen like that you have the value of n decreased increased by 1. Value of n increased by 1. Yes. Is that clear? ठीक है तो स्पेक्ट्रल लाइन इससे बनता है द डिफरेंट एमिशन स्पेक्ट्रल लाइन दे आर फॉर्म्ड ऑफ दिस रीजन अच्छा इसमें एक चीज याद रखना पड़ेगा विजिबल स्पेक्ट्रम किसमें आता है मालूम है बामर में विजिबल होता है ना अच्छा ये बामर सीरीज में occurs in the visible spectrum এটা একটু লিখে রাখেন বার্মার সিরিজে যেটা তৈরি হয় that only comes in visible spectrum বাদ বাকি কোনটাই visible spectrum এ আসে না ঠিক আছে